Good morning, students. I am your teacher, Mahimlata, and this is biotechnology. We have started the introduction of the microbial cell culture, microbial culture techniques, nutrients for microbial culture. In that, we have read that different kinds of media can be prepared in the laboratories, and they are called synthetic medias. When we can mix the components composition of the media and then make a medium, this is called synthetic medium, which is having all the new substances composition mixed in it. And alternatively, when we use trypticase, soya broth, and the ready-made bran heart infusion, beef extracts, and casein digest, these materials, if we prepare the media, it's called semi-synthetic medium. And then if we are culturing on the large scale, like in the bioreactors and the fermenters, then the source, the media need to be sterilized, and the instrument also need to be sterilized. And what are the selecting, what are the parameters on which we select the media are these four parameters we that it produce maximum product. It is also causing minimum problems during sterilization. Its consistent quality should be there even throughout the year. Give maximum problems. Sorry, they give minimum problem during processes like particularly aeration, agitation, and the carbon source, nitrogen source, trace elements. We have read that these substances are used, commonly used agents or sources. Growth factors are there. Some microbes use specific nutrient like amino acids, vitamins, and anti-foaming agents. And most microbial processes, foaming is a property. Foaming is due to the proteins also, and substances produced by the microbe. And excessive foaming denatures the protein. So foaming, anti-foaming agents are added like olive oil, silicones. Energy sources are the carbohydrate, lipids, and proteins. Water. Water is the major component of the culture medium, and when required for culturing microbes in the laboratory, distilled distilled water would suffix. When assessing its suitability for large-scale microbial culture industry, we should consider pH and dissolved salts. And culture procedures, we have studied about the sterilization processes, procedures, and how we can sterilize the laboratory instrument, the autoclave, and we can sterilize by the steam, the fermenter, which is a big vessel, which is having capacity of 1,000 liters also, and the same at the same pressure, 15 lbsi, psi, lbs, and psi in the vessel, 20 minutes. The fermenter is inlet with a large amount of steam, and which is for fermentation vessel is sterilized. Aeration and mixing. For aeration and mixing, there are various arrangements, there are various procedures. Inside the lab, we have baffle flask and the shake cultures, shakers, and the incubator shaker also is there. Yesterday, we have seen the image of that. And also in the fermenter, we have mechanical stirrers, impellers, baffles, increased turbulence, and ensure adequate mixing. Forced aeration also is providing the mixing of oxygen. Equipment for microbial culture. So this is our topic now. Laboratory में microbes को culture किया जाता है tubes, ordinary earthenware flask में, and such cultures are usually carried in 100 and 1000 ml volumes, and growth of the microbes in the laboratory can be augmented by simple improvements. डिजाइन में थोड़ा improve करके माइक्रोब की ग्रोथ करी जा सकती है फ्लास्क और शेकर को यूज करके. बैफल फ्लास्क में सिंपलेस्ट वे है producing a V-shaped notch or indentation in the sides of the flask. And such flask or baffle flask improves the growth of the microbe, improve the efficiency of oxygen transfer due to the increase of turbulence of the culture medium. And shakers continuously agitation करते रहते culture medium का greater
इम्प्रूव कर लेते हैं ये ऑक्सीजन ट्रांसफर को, एंड दिस इम्प्रूव्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब इन द लेबोरेटरी. इट इज डन बाय यूजिंग ऑफ शेकर्स. Shaker may be end-to-end type, rotatory type, incubator shakers are also there, which can provide the particular temperature at which the organisms need to be there. And fermenter bioreactor vessel होते हैं large scale growth microbial कराने के लिए काम आते हैं, controlled environment में कराते हैं. Basic design fermenter की यूनिट 1 में हमने देखी थी. एंड इट इज क्लोज्ड वेसल विद एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ एरेशन, एजिटेशन, टेम्परेचर, पीएच कंट्रोल, drain and overflow vent to remove the culture microbes along with their products. So culture vessel में ये सारे arrangements होते हैं. Vessel is capable of being operated aseptically for a number of days. वेसल के अंदर बहुत सारे स्टेराइल, बहुत दिनों तक उसे स्टेराइल रखने का अरेंजमेंट होता है. दीज आर ऑल्सो इक्विप्ड विद sampling port which allow withdrawal of the fermentation broth at regular intervals while the fermentation is processed. तो बहुत सारे सैम्पलिंग पोर्ट भी होते हैं जिससे हम सैंपल को थोड़ा थोड़ा रिलीज करके कल्चर फर्मेंटर से और उसकी प्रोग्रेस देख सकते हैं कि कितना कल्चर हो चुका है, कितना प्रोडक्ट बन चुका है. देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ फर्मेंटर बायोरिएक्टर डिजाइन. द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर स्टेयर टंक बायोरिएक्टर इन विच द कल्चर मीडियम इज स्टेयर्ड विद एन इम्पेलर. तो सबसे कॉमन टाइप का बायोरिएक्टर यही होता है जिसमें इम्पेलर से कल्चर मीडियम को स्टेयर किया जाता है. और कॉलम रिएक्टर एयर इज फोर्स्ड. और जो सेकंड तरीके का है वो आपका बबल कॉलम रिएक्टर है. बबल कॉलम रिएक्टर में एयर फोर्स की जाती है बीम स्पार्जर से, जिसकी वजह से एजिटेशन होती है, इंश्योर प्रॉपर एरेशन. तो फोर्स्ड स्ट्रीम उसमें डाली जाती है. ये आपका डायग्राम है बायोरिएक्टर का. कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि स्टीम के लिए, स्टेराइल एयर के लिए इसमें इनलेट है, कूलिंग वाटर इन को और कूलिंग वाटर आउट, कोल्ड जैकेट है, एंड इम्पेलर इसमें लगे हुए हैं सेंटर में जो कल्चर मीडियम को रोटेट करते हैं. स्टीम के लिए, आउटलेट के लिए भी एक एग्जिट है, एंड एग्जॉस्ट के लिए भी एग्जिट है. पीएच कंट्रोल और इसमें एसिड बेस के लिए भी कंट्रोल के लिए रीसेटर पंप है और मोटर है बीच में. इट शुड बी नोटेड हाई concentration of microbial cells is achieved in a fermenter would rapidly deplete the soluble oxygen in the medium, creating the anaerobic condition that may not be favorable for the growth of the microorganism, the production of the desired product. So post aeration is done. The rapid growth of microorganism in the fermenter quickly alter the pH of the medium. So the pH of the culture growth is continuously monitored and acid and alkali is added and as required. However, you should not harbor any notion that fermenters are used only for the large scale growth of the microbes at industrial scale. Small scale fermenters capacity 10 to 100 liters also used in research laboratories. These are also scientists in research. These are also helping in the scientists in the research. Various parameters of the growth of the microbe. The laboratory scale fermenter also used by the scientists to produce enough quantity of the metabolites from microbes for research purposes. So laboratory scale fermenters में पहले यूज करके फिर लार्ज स्केल फर्मेंटर्स में डाला जाता है. यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, एक लेबोरेटरी स्केल फर्मेंटर है और एक लार्ज स्केल फर्मेंटर है. कैसे पूरा अरेंजमेंट है कि लेबोरेटरी स्केल को स्केल अप करके हम फैक्ट्री में लार्ज स्केल फर्मेंटर में भी वही सारा कंपोनेंट और उससे प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो दिस देयर इज अ डायग्राम व्हिच इज गिवन हियर. अ लेबोरेटरी स्केल फर्मेंटर, इंडस्ट्रियल स्केल फर्मेंटर, टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कल्चर. अब आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कल्चर पढ़ेंगे जब हम एक बार में बहुत सारा सैंपल जितना हमारे लेबोरेटरी स्केल में आ सकता है एक बैच में उसमें डालते हैं और उसमें माइक्रोब को ऐड करते हैं और पूरा रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में बदलते हैं. तो बैच और को क्लोज कल्चर भी कहा जाता है क्योंकि उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मीडिया डाला जाता है एंड माइक्रोब्स को ग्रो होने के लिए टाइम दिया जाता है. एंड यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो इस बैच में होती है. सिंगल बैच जब पूरा कल्चर उसमें ग्रो हो जाता है तो प्रोडक्ट बन जाता है. फीड बैच कल्चर कंटिन्यूअस कल्चर होता है. फ्रेश मीडियम को हम फीड भी करते रहते हैं और
थोड़े अमाउंट में जो प्रोडक्ट बना है सबस्ट्रेट है के साथ उसे उसका यूज सबस्ट्रेट के साथ उसे रिलीज भी कराते रहते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर वेरी इंटरेस्टिंग, कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ लिमिटेड क्वांटिटीज में धीरे धीरे करके हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेंटेन करके यहाँ पर माइक्रोब्स की, और जब एग्जॉस्ट हो जाए मीडिया तो फिर नया मीडिया डालते जाते हैं, दूसरी तरफ से आउटलेट से मटेरियल रिलीज कराते जाते हैं। कीमोस्टैट, टर्बिडोस्टैट, ये दोनों आपके कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंटिन्यूअस स्टेट की दे रखी है, और स्टेडी स्टेट का ग्राफ दिखा रखा है, तो ये ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। एंड आपको यहाँ पर फीडबैक कल्चर का ग्राफ दिखाया है, एस शेप कर्व दिखाया है यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फीडबैक कल्चर इज गिवन, एंड हियर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैच कल्चर, दिस इज ऑल्सो गिवन। इट इज शोइंग द graph lines, one for the X and other for the QS and the other for the S. सो ये आपका 3 तरह के कल्चर हो गए, बैच कल्चर, फीड बैच कल्चर एंड कंटिन्यूअस कल्चर। यहाँ आपने आज समझा कि बायोरिएक्टर्स स्मॉल स्केल लेबोरेटरी पे होते हैं और कुछ बायोरिएक्टर्स लार्ज स्केल फैक्ट्री के लिए यूज होते हैं। एंड बेसिक फर्मेंटर की डिजाइन आपने रिवाइज करी, एंड कल जो हमने पढ़ा था वो हमने रिवाइज किया कि कैसे शेकर्स और एल्यूमिनियम फ्लास्क में हम लेबोरेटरी के अंदर पहले स्टार्ट करते हैं कल्चर करना। माइक्रोबियल इक्विपमेंट्स को हमने समझा, और कल्चर मीडिया के बारे में थोड़ा सा हमने स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर थ्रू द ऑटोक्लेव 15 to 20 मिनट्स फॉर 15 LBS एंड PSI पे किस तरह से स्टीम करते हैं हम, तो ये हमने पढ़ा। तो आई होप आपको ये रिवीजन क्लास पसंद आई होगी। इट्स शॉर्ट क्लास, सो दैट आप इसके टॉपिक के बारे में रिवाइज कर लें, एंड आगे हम कल्चर ग्रोथ कर्व्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन बाय, एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो hit the like button and also share and subscribe my channel and share with your friends who are reading biotechnology. Thank you.